class. This is your class of Principles of Commerce by me, your teacher Sumera Mahmood, and today we will discuss the topic of warehousing, and I will share a few slides with you. Wait, yeah, this is your chapter of warehousing. In the last class, we have gone through the topics theory from our notes and from the book, and now today I'm sharing with you the slides of the warehousing, so you people can go through because it is comprises of the definitions which we have to go through for the examination perspective. आप लोगों को पार्टनरशिप सॉरी वेयरहाउसिंग से रिलेटेड जो आप लोग को कंटेंट गो थ्रू करना है कि वेयरहाउसिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या होती है, गोडाउन्स एंड स्टोरेज. Then you must remember and go through the advantages of warehousing, that why it any company or any business needs the warehousing or protection shelter for the commodities and goods they are having. Here they have mentioned you the few functions of commerce on which your commerce is comprises of. It means your commerce is based upon the following functions. First of all, if you know the functions of your commerce or the business which you are going through, then you can do all the necessities for the business well. So the first function which is mentioned over here is your production function, then your banking function, your finance, and then your transportation. As we have discussed, the transportation is very essential tool, and in the next chapter after warehousing I will discuss with you the roles and the means of transportation for the business. Then we have the warehousing current chapter, or the storage or godowns. We are going through the need of the warehousing in the current chapter, and then information about the business, the quality quantity of the product, all the future expected valuations, the past experiences about the related business. Then you have insurance, then how our things get insured, how what is the information about the product risk, and how the risk can be or insurance can be insurable and insurable. We have gone through this in the insurance chapter. The second point they have discussed over here about the grading and standardization, how your products can be graded and how we can declare your any product can be A quality, B quality, how you can maintain the standard of your product in the national and international market. Then you have trade. Okay. Trade and aids of trade. You people have gone through in your chapter 1 also, that trading plays a very important role to generate your foreign exchange. We have gone through the internal external trade and foreign trade, that is your import export also. Now let's talk about your introduction of warehousing. Okay, so introduction of warehousing is based upon, you can see on the picture, a warehouse. A warehouse is a commercial building for storage of goods. Warehouse are used by manufacturer. This option is coming on the screen and just disturbing my video. Wait for a while. Okay, what should I do? Wait for a while, please. I will share it again. Yes, warehouses are used by manufacturers, by importers, exporters, wholesaler, retailers even, and transport businesses and custom. So warehouse is used commercially by everyone, those who want to store their commodities and goods. For the functions of import export, definitely all such functions need bulk of goods, bulk of commodities to be stored. So warehousing plays a very important role for the manufacturer, so that we can use the seasonal products storage, and non-seasonal storage can also be done in the warehousing. Then we can use the purpose for the importers and exporters, that once their products are import over here or export products, then we can hold those products, because what is the exact definition for the warehousing, that it is used for holding your products in the godowns. Then definitely another person is your wholesaler.
Wholesaler is that person who is purchasing the commodities in bulk. So definitely when he is purchasing the commodities in bulk, so he need to save the commodities at some place, and warehousing is creating your place utility for the business. Okay, then we have transport business. Definitely the transport business needs some place where they can store their commodities before all the goods are not yet exporting to the point of consumption. Okay, definitely जब तक हमारे पास प्रोडक्शन गोइंग ऑन है और आपके पास commodities कंज्यूमर और रिटेलर की शॉप तक मूव नहीं करती, then wholesaler needs godowns. Your transport business needs godowns for the storage of the commodities, so that they can move from one place to another very easily. And then last they have mentioned you the custom. Okay, the custom house is very much, you can say, they have their own separate um, huge warehouse in which they check even first the commodities. They open up the packaging of the product and they go through it properly. After fulfilling all the fast you can say criteria of import and export procedure, then the custom first clear the product, and then it will be export and import. Another point they have discussed over here, warehouse provides the backbone for the product being stored, inspected, verified. So the main point which we must highlight, that it is first of all a commercial building or commercial activity and commercial facility for the storage of goods, where goods are get stored. It is used by the importer, exporter, transporters, and customs house. It is used as a backbone of product. Okay, we can use it as a backbone of a product because the production, you can say, हमारी जितनी भी प्रोडक्शन बेस करती है, वो अगर हमारे पास प्रॉपर गोडाउन या वेयर हाउस नहीं होगा, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमें प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी. And we should not stop our products. We can do it on a slow process, because once your product is out of season, you can slow down your production, but you cannot close your production, because it will spoil your factory and make your running business down. Then what is the role over here in the warehouses? The products should be first inspected, verified, and delivered. These are the three important functions of the warehousing. Then what is the process going on? You can memorize it by the word capital I, V, and then D. Your first of all, your product should be inspected. Then secondly, your product should be verified. And third, your product should be delivered. Okay, so it should be the main function of your warehousing. And you, yes, another is your storage also. It is being stored, the whatever the product you need to be, but first the stored product should be properly inspected and checked by the specific person. Then it should be verified also by the person, that all the commodities is properly packed, the commodities, the number of commodities, all the origin of the product, कि किस country का origin है और उसकी क्या specification है, and on which mode or which port that product should be delivered, mode of delivery, port of delivery, mode of payment, everything should be checked properly from the company to the consumer. And ensuring about the quality. Here they use the word quality. I must add one word, that is quality, and quantity of the product should also be checked. Okay, then I move towards your next slide. Functions of storage, your warehousing. Your functions of storage or godowns are: first function is the storage of large and bulk commodities. Then second one, you have price stabilization. Once you have availability of products, your price of the product can be established. Okay, it can be stabilized, it can be maintained well. So it will not cause any inflation in the market.
बिकॉज आपकी वो प्रोडक्ट जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है उसकी मार्केट प्राइस अक्सर रेज हो जाती है। सपोज कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आपके स्पेसिफिक टिन्योर में पेशेंट्स को नीड है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं उस स्पेसिफिक डिजीज़ के, तो हमारे पास प्राइस ऑफ that medicines will increase. Currently, if I talk about your COVID, so there are few medicines which we are recommended to the COVID patients. So those medicines are very rare in the market, and once it is available, the prices are so much high. So unavailability of the product will make the price of the product will be higher. Once your product is properly available to the consumer, the price will be stabilized, and it will give you the profit growth margin, and your company profit and stability will be maintained. Yes, warehousing sometime it will be act as a risk bearing because we have stored the product, and if you meet any national climatic, and national calamities means you can meet any you can say flood, heavy rain, some fire, or you can say any disasters if you feel, then your stored products can be damaged. So that's why we use the word over here, risk bearing. It can also be a risk bearing, because if we don't save the products appropriately, and we have saved them more than the expected sorry, the space, and it is not delivering to the consumer, so that it can be the loss for us. Then we have financing. Okay, the financing is a very important point, because all the products which we are using in our manufacturing, so all everything needs investment. हमारे पास finance बहुत important point है. साइमल्टेनियसली जब वेयर हाउसिंग में हमारे पास फाइनेंस को यूटिलाइज करना है, सो वेयर हाउसिंग डिपेंड करता है आपकी कमोडिटी पे, आगे आपको कौन सी कमोडिटी के लिए कौन सा वेयर हाउस की रिक्वायर्ड है, कौन सा गोडाउंस चाहिए, कौन से वेयर हाउसिंग चाहिए. As I have discussed with you, the cold storage, like we need it for the ice creams, for the frozen food, for you can say dead bodies. So they all are need the cold storage, then hot storage, then dry storage. So there are different vegetables, fruits, and different commodities need a different sort of shelter of the business. So again, finance is depend upon your warehousing, in not only in the manufacturing of the warehousing, but also the production of the products that you need to be stored in the warehouse. Another point is grading and packaging, the how you grade your product according to your warehouse. Definitely in your warehouse you store the products like that is more demanded by the customer, so you need to grade it, and you have to maintain the proper packaging of the product, so your product cannot be spoiled. Like you have stored wheat, rice, sugar, then you have to take care of those commodities and do it proper packaging. So it depends upon your product which you are even storing, so what type of packaging you have to provide to your specific product. Okay, so we yes, I proceed towards the another content, because all these points will be very much helpful for you to learn the heading wise, you can say functions of warehousing. So if you can write it down in your board examination, these five headings, the function of warehousing, and then you can elaborate it, so that will be more beneficial for you to learn in headings. Okay, I proceed. Yeah, this is your next heading. All the basic description I have discussed with you. Now, this is the elaboration of the headings which I have gone through. That what is the function of storage. The first heading we have mentioned over here. Now, I will highlight and read it for you people. That this is the basic function for the warehousing. Surplus commodity. Surplus का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा sufficient available हो.
सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमिजिएटली, जो कि हमें जिसको फौरन जिसकी हमें नीड ना हो, कैन बी स्टोर इन द वेयर हाउस। ठीक है, सरप्लस का मतलब होता है हमारे पास वाफिर मिकदार में वो कमोडिटीज जिसकी आपको फौरन नीड ना हो, वो आपको अपने कहाँ पे स्टोर करनी पड़ती है, वेयर हाउस में। ठीक है, जिस तरह आपके पास कुछ ना कुछ कमोडिटीज आपके पास घर में भी एक स्टोर रूम होता है, जिसके अंदर आपके पास सपोज अभी विंटर्स आ गई हैं, तो अम्मी क्या करती हैं यूजली, और मदर्स वो सारे जो है वो समर स्टफ और समर क्लोथ्स पैक्ड अप करके विंटर क्लोथिंग आउट कर लेती हैं। तो अगेन क्या होता है कि जो कमोडिटी के अभी हमें करंट नीड नहीं होती, इमिजिएटली रिक्वायर्ड नहीं होता, हम उसको पैक्ड करते हैं और हम उसको अपने घर का जो स्टोरेज होता है, जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं, हम वहां ले जाके उसको सेव कर देते हैं। फिर अगेन द सीजन चेंज, और फिर हम इसी तरह अपनी वो कमोडिटीज जो हमें इमिजिएटली चाहिए होती है उसको निकाल लेते हैं और बाकी को हम अंदर रख देते हैं। सो दोज कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमिजिएटली, हम उनको फौरन अपने स्टोर रूम में रख देते हैं। दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन दे नीडेड बाय द कस्टमर। The next heading is price stabilization, that how your price get established. Warehouses plays an important role in the process of stabilization. इट इज़ अचीव बाय द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। हमारे पास बेसिकली जो वेयर हाउस है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है दो यूटिलिटीज़ में। एक तो हमारा टाइम भी सेव करता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले से ही प्रोड्यूस्ड होके मैन्युफैक्चर्ड होके वेयर हाउसेस में रेडी रखी हुई होती हैं। प्लस आपका वेयर हाउस आपकी प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, fall in the price of goods when their supply is in the abundance, and rise in the prices during the select reasons are avoided। हमारे पास क्या होता है उन टाइम्स पे जिसमें प्राइसेस हमारे पास फॉल हो जाती हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी अबंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वही वाइस वर्सा आपके पास चीज़ है कि मैंने अभी आपको जिस तरह बताया कि वो कमोडिटीज जो कि आपके पास मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होंगी, उनकी प्राइसेस यूजली हाई हो जाती हैं बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। और अगर इसी तरह आपके पास वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सफिशेंट प्राइसेस में अवेलेबल होंगी, अबंडेंस होंगी, तो उसकी प्राइस डेफिनेटली फॉल रहेगी। बट इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द सेलेक्ट रीजंस, देन डेफिनेटली प्राइस आपके पास बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी स्टफ है, जैसे इट्स अ सीजन ऑफ विंटर, तो विंटर में हमारे पास जितने भी ब्लैंकेट्स हैं, वूलन क्लोथिंग है, उनकी प्राइसेस हाई होती है बिकॉज द कस्टमर्स डिमांड आर मोर फॉर द वूलन क्लोथिंग। Next we have the risk bearing. Okay, when the goods are stored in the warehouse, they are exposed to many risks in the form of theft, deterioration, exploration, fire, heavy rains. This is what we have discussed कि हमने अपनी products को अपने गोडाउंस में बहुत safe करके रखना है। Financing loans can be raised from the warehouse keeper against the goods stored by owner। हमारे पास अगर किसी के पास वेयर हाउस या स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो लोग यूजली लोन्स लेके अपनी प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए वेयर हाउसेस या तो रेंट पे लेते हैं या कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। देन गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी। अच्छा, अगर हम वेयर हाउस नहीं बनाते तो क्या होता है, हमारी गुड्स की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनके डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, उनको शेल्टर नहीं मिलता, या ठीक है उनको वो प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिलती, वो टेम्परेचर नहीं मिलता जो कि हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो हमें हर प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर उसको सेव करना है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये तो मेन पॉइंट है आपकी, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। Similarly, banks and other financial institutions also advance loans again warehouse receipts। ठीक है, ज़रूर दिया जाता है कि अगर कोई ये रिक्वेस्ट करे कि हमारे पास कमोडिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग की है और हमें अपने वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करवाने हैं या हमें नीड है, तो उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Because in this way the business will be more growth and more prosperous, और जितना ज़्यादा बिजनेस प्रॉस्पेरस करेगा उतनी ज़्यादा आपकी जीडीपी मेंटेन होगी, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगा, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। सो इसकी एक बहुत लंबी सी चेन हो जाती है। In this manner warehouse act as a source of finance for the businessman। हमारे पास ये एक source of finance बन गई है for meeting the business operations। The last point is grading and packaging।
As I've discussed with you, the warehouse nowadays provides the facility for packaging of the product, for the processing, for the grading of the goods. अभी मैंने आपको बताया था A quality, B quality, then quality A, quality B. यूजली जो आपके प्रोडक्ट्स होती हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। ठीक है, कि किस प्रोडक्ट को आपने हैंडल विद केयर करना है, उसको प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन करना है, या वो डेलिकेट है, फॉर एग्जांपल उस पे आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखना है। ठीक है, जैसे सपोज आपके टेलीविजन्स होते हैं, एलसीडीज होती हैं, उन पे प्रिकॉशनरी लिखा हुआ होता है कि ये ग्लास फैब्रिक्स हैं, तो उस पे आपने वेट नहीं रखना है, उनको आप सेपरेट रख रहे होते हैं। सो अगेन, जैसी आपकी कमोडिटी होती है आपकी पैकेजिंग में, वही एप्लीकेशंस होती हैं। लाइक यू वी आर यूजिंग सम टाइम थर्मोपोल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लास मटेरियल्स। सो इसी तरह हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर। ठीक है, उसको प्रॉपरली कन्वीनियंट साइज में भी रखते हैं, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मोड ऑफ डिलीवरी। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो है वो एक 1 फुट की और आप उसको 10 फीट के कार्टन में रख रहे हैं। और तो लाइक वी शुड पैक द commodity as it will be delivered to the consumer in the proper form। ठीक है, डैमेज पीस में ना जाए, प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास कंज्यूमर तक रीच करे। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। नाउ आई प्रोसीड द नेक्स्ट स्लाइड। You people can take the screenshot because it is the function of your warehouse which you can write in any question of your warehouse। a question में आपको exam में पूछते हैं define warehousing, you can say it is a place where we can hold our goods for the future needs। then the functions of the warehouse, you have 5 functions of the warehouse. Number one, storage, price stabilization, risk bearing, finance, and then grading and packaging। So these are the 5 functions of your warehouse। Next we have टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। मैंने आप लोग के साथ लास्ट जब हम लोग अपने मैनुअल्स को गो थ्रू कर रहे थे, आई हैव गो थ्रू विद यू के वेयर हाउसिंग में प्राइवेट वेयर हाउसिंग किसे कहते हैं, पब्लिक वेयर हाउसेस क्या होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग एंड अदर टाइप्स में बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड दोनों टाइप्स की वेयर हाउसिंग आते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो पब्लिक एंड प्राइवेट वेयर हाउसिंग है। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। We have 4 types mentioned over here, you can see the pictures on the screen of your private warehousing and your public warehousing। Okay, the private warehousing are constructed and owned by the business enterprises, so this is the main definition for the private warehousing, in order to store the products produced by them। ठीक है, they are exclusively owned and used by the producer। This is the second point that you people have to learn for the definition of private warehousing. It is exclusively owned and used by the producers and are not meant for other manufacturer business unit। ये हमारा पर्सनल और प्राइवेट वेयर हाउस होता है जिसमें वो commodities जो हमने अपने खुद मैन्युफैक्चर करी होती हैं वो हम अपने यूज़ के लिए इस वेयर हाउस को रखते हैं। वी आर नॉट अलाउइंग एनी वन टू यूज इट एज अ पब्लिक वेयर हाउस। Now, public warehouse, these are also known as duty pay warehouse, where many companies can, you can say, save their commodities and they have to pay specific fees for this public warehouse. A public warehouse or the duty paid warehouse is one which is open for public at large. So this is the second point. It is open for public। most of the business organization, especially small and medium scale businessmen जो कि अपना पर्सनल वेयर हाउस नहीं मेंटेन कर सकते या नहीं कैरी कर सकते, वो पब्लिक वेयर हाउस में अपनी कमोडिटीज जो है वो स्टोर कराते हैं फॉर द स्पेसिफिक पीरियड एंड दे पेड अमाउंट टू दैट स्पेसिफिक वेयर हाउस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्मॉल मीडियम स्केल कैन नॉट afford to have their own warehouse ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वेयर हाउसिंग के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत लार्ज चाहिए होती है इन देयर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस। सो दे यूजली पेड द फीस एंड देन they can store their products in the public warehouse। I proceed next।
We have bonded warehouse. Bonded warehouse are used for imported goods. Okay, when we are importing some goods from different countries, जब हमारे पास import का मतलब होता है हम लोग जब मंगाते हैं ना हमारे country में जब सामान आता है from other countries, so we are importing goods from the other countries, we usually have this type of warehouse which are not guaranteed clearance. It is not necessary that they are guaranteed on account of non-payment of custom duty by the importer. So you people have to pay the custom duty also for the warehousing, which are not guaranteed clearance. They have no such clearance for the you can say your commodity clearance is not necessary. ये उस चीज़ के liable नहीं होते हैं. Such warehouses are situated near your ports, like your bonded warehouse on your KPT, your Gwadar port, your port Qasim. These are all your ports जहाँ पे आपके पास bounded warehousing मौजूद होती है. यहाँ पे सारी कस्टम क्लियरेंस भी होती है, सारी चेकिंग भी होती है. ठीक है. एंड उन्होंने लिखा हुआ है आगे क्लियरेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. ठीक है. देन वी हैव गुड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दीज वेयर हाउस अंटिल द कस्टम ड्यूटीज आर पेड. अगर आप कस्टम ड्यूटीज पेड नहीं करेंगे देन यू आर नॉट अलाउड टू स्टोर और सेव योर प्रोडक्ट्स ओवर हियर फॉर द नेक्स्ट स्टेप. ओके. सो okay, we have another type, that are some other types of warehousing also. Special commodity warehousing. अभी मैंने आप लोग को डिस्कस किया था स्पेशल commodities में, जैसे हमारे पास इस कोल्ड स्टोरेज में डिस्कस किया था हमने व्हीट राइस की स्टोरेज डिस्कस करी थी. सपोज आपके सी फूड हैं, फिश है, प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, इनकी स्टोरेज जो होती है वो कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है आपके पास. ठीक है. कुछ आपकी कमोडिटीज ऐसी हैं जिनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल वीट है, राइस है. सिर्फ ईटेबल्स के अलावा आपके पास फर्नीचर्स भी हैं, या आपके पास अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं. सो हर किसी के लिए स्टोरेज डिफरेंट चाहिए होती है. स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउस, दीज वेयर हाउसिंग. ठीक है. नंबर वन, these warehouses are constituted for storing the particular type of commodities like tobacco, cotton, wheat. Second, we have cold storage and refrigerated warehousing. ठीक है. What are refrigerated and cold storage? These are warehouses which are used for स्टोरिंग पैरिशेबल commodities. ठीक है. हम जिनको ऐसी commodities जो कि आपके पास जल्दी फिनिश्ड होने वाली हैं, जो कि आपके पास जल्दी फ्लो ऑफ प्रोडक्ट जिनका ज़्यादा होता है, लाइक एग्स हैं, बटर है, फ्रूट्स है, फिश, इनकी हम स्टोरेज कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में, जिनकी बहुत मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और जल्दी जल्दी वेयर हाउसिंग से इनको इनका आउटफ्लो भी ज़्यादा होता है. It's a institutional warehousing where different institutions and bodies have their own warehouses on account of the nature. कि डिपेंड करता है कि बैंक्स में आपके पास स्टेशनरी की ज़रूरत है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, रेलवेज में है. यही मैं आपको बता रही हूँ कि डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा बिजनेस है. फूड कॉरपोरेशंस हैं डिफरेंट, तो कौन सा बिजनेस है जिसके आपके पास उस बिजनेस के स्पेसिफिकली उसकी नीड है. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आपके पास कुछ व्हीट राइस स्टोर हुआ हुआ है, या आपके पास कुछ हो सकता है सी फूड्स हो. देन यू कैन से दिस इज योर एनी ब्रांच और एनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो हर बिजनेस के सेपरेट गोडाउंस मौजूद होंगे. सो दिस इज द कंक्लूजन. इन द लास्ट स्टेप वी हैव अ कंक्लूजन. देयर वेयर हाउसिंग is a procedure whereby a company gradually builds up holding of shares in a company. क्योंकि जैसे ही वो बिल्डिंग वेयर हाउसिंग होती है तो बिल्डिंग के अंदर उस कंपनी के अंदर उसका एक स्पेसिफिक शेयर बन जाता है. इट विशेस टू टेक ओवर इन द फ्यूचर. सही है. द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गोज विद इन द स्टोरेज फैसिलिटी. जो वेयर हाउसिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो होता है आपकी स्टोरेज फैसिलिटी. ठीक है. तो इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन. प्रोसीजर क्या है हमारे पास जिससे कंपनी टाइम बाय टाइम होल्ड अप करती है, बिल्ड करती है किस चीज़ को, होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी. इट विशेस टू टेक ओवर इन द फ्यूचर. ऐसी कमोडिटीज को वो होल्ड करती है जिसका शेयर
फ्यूचर नीड में उसको नज़र आता है. Again, warehousing and storage and godowns are very much important for any business, because it gives you the facilities of availability of the product, storage of the product. It saves your product to being spoiled. This is all for today. Thank you so much for listening, and keep watching my videos. Thank you so much.